Hey guys, welcome back to my channel. কি খবর আপনাদের? I hope you all are doing good. So yes, as you guys were requesting me from so long that कब से हम लोग के यूनिवर्सिटी में लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा लाइक यूजी और पीजी के लिए. सो फिलहाल तो ऐसे कोई नोटिस नहीं आए, बट या लाइक फ्रॉम जनरल नॉलेज लाइक हम लोग का जब हुआ था, इट्स लाइक एट द लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल और मई हम लोग को वो मिल गया था आपका जो फॉर्म फिलअप के लिए जो लिंक आता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आ गया था. होपफुली इस बार भी आ जाए, सो बी रेडी विद दैट. एंड यस, अच्छे से देना एग्ज़ाम्स बिकॉज लाइक कंपटीशन ज़्यादा हो गए हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है. इस बार भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की लाइक एडमिशन हुई नहीं पाए. सो इसीलिए आप लोग रेडी रहिए जब भी हो जाए एग्ज़ाम, सो दैट आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे. और लाइक हाँ, मई लास्ट तक तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होता है, एडमिशन आपका जून में हो जाएगा. सो बी रेडी विद दैट, बी रेडी बिकॉज टफ होता है एग्ज़ाम इस बार से. तो इस बार तो और टफ होगा बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी अपियर करते हैं एग्ज़ाम्स में. एंड क्वालिटी बढ़ रहा है डे बाय डे. सो यस, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है. सो यस, यू गाइस हैव टू गिव योर बेस्ट to get a seat in this university. So be ready, okay? And from my side, best of luck. And whenever the notification will come, no, I'll let you know. I'll put a video on my YouTube channel. So do subscribe my channel, hit the bell icon, and do give a like if you like my videos. Then please, and do share my video with your friends. So लाइक उन लोग को भी हेल्प हो जाए कि लाइक हाँ, किसी किसी को नहीं पता होता है कि लाइक कब होगा, कौन सा ये यूनिवर्सिटी, किसी किसी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. सो इसीलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, your family, so that like your parents also will like get some interest on that कि like हम बच्चे को कहाँ पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए. सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये हम लोग के पास मौका है कि लाइक व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नो, एज वी हैव एज द गवर्नमेंट आर गिविंग अस सो गुड लाइक फैसिलिटीज टू अस. लाइक सेंट्रल में पढ़ो इतना कम खर्च में, बहुत ज़्यादा कम खर्चा है. एंड यस, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, लाइक one or two three person has asked me like about the fee structures. I don't know the other department, but then the department of microbiology, biotechnology, zoology, it's like the fee structure is very reasonable. Like for admission it was just like 7,000 or 8,000 maybe, and the first semester it was like 5 I guess, and third it was also 4,000 I guess. And till now we haven't give about 4 semester फी, लाइक अभी तक आया नहीं है उसका. सो यस, सो इतना फीस नहीं है, फीस बहुत रिजनेबल है. हाँ, पेज सीट होता है, एक पेज सीट में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, अगर आपको मेरिट बेस पे, मेरिट्स के बेस पे आपको नहीं मिलता है, उसके बाद एक सीट होता है जो पेज सीट होता है, वो पेज सीट के थ्रू आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका ज़्यादा होता है. लाइक इन माई डिपार्टमेंट इट वॉज लाइक 25,000 ईच सेमिस्टर. लाइक वो अपने आपको सेल्फ क्या कहते हैं उसको, हाँ, सेल्फ अपना सेल्फ स्टडी जैसा होता है. लाइक क्या कहते हैं उसको, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स. यस, लाइक सेल्फ स्पॉन्सर्ड, काइंड ऑफ सेल्फ स्पॉन्सर्ड, खुद को स्पॉन्सर्ड करके लाइक पढ़ रहा है उस यूनिवर्सिटी में. लाइक इट्स डिपार्टमेंट हैव एटलीस्ट 6 to 10 पेज सीट. सो पेज सीट पे भी अप्लाई कर देना अगर किसी को मतलब डाउट रहता है कि लाइक हाँ नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, तो वो लोग पेज सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एज आई डिड. बट देन थैंकफुली with gross grace, like मेरा तो मेरिट पे ही हो गया था, बट आई अप्लाइड फॉर पेड सीट टू बिकॉज आई वाज लाइक आई नीड टू, मेरा ये था कि मुझे सेंट्रल में ही पढ़ना है. तो इसीलिए आई वाज प्रिपेयर्ड कि लाइक हाँ, मुझे जैसे भी मुझे सेंट्रल ही चाहिए. सो मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत 2 3 4 जगह मुझे मिल गए थे, लेकिन मैंने लिया नहीं बिकॉज आई प्रेफर सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो इसीलिए मैंने सेंट्रल में ज्वाइन किया था. वैसे स्टेट बुरे नहीं है, स्टेट बहुत अच्छे हैं, और मुझे बाहर आना था, इसीलिए मैं असम से थोड़ा बाहर देखा था, तो इसीलिए सेंट्रल ये मिल गया तो इसमें ले लिया. ऊपर से सब्जेक्ट भी थोड़ा यूनिक है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं. as I have done my graduation from biotechnology, so microbiology is the best option for me. So मैंने सोचा कि माइक्रो में ही कर लेता हूँ, तो इसीलिए माइक्रो में कर लिया. And now it's my 4th semester almost over. So last few months I have in my hands, so I'll make as much as video I can.
And yes, you guys, please do support me as much as you guys can, and do share my videos with your friends, family, so that like yeah, everyone gets this notification like कहाँ से कैसे like क्या कौन सी कैसे यूनिवर्सिटी है ये. मेरे हिसाब से तो अच्छे ही है, बहुत अच्छे है, like कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे अभी तक. एंड लाइक या लैब्स आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे डिपार्टमेंट में. तो मैंने बाकियों का मुझे नहीं पता, इतना मैं नहीं गया हूँ, पर मेरे डिपार्टमेंट में तो ये प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, एवरीथिंग इज क्वाइट वेल. सो येस, यू गाइस शुड कम एंड येस explore the place, best part. Yeah, and yeah, with this video I have put it one more like video of my university. Like that day I came from my hometown and I was in plane, so I got to know from the plane, no, हम लोग को अपना यूनिवर्सिटी का ऊपर से व्यू दिखता है, तो वो व्यू का वीडियो मैंने लगा मतलब मुझे मिला है. सो वो वीडियो में मैंने लिया है खुद से. लाइक क्वालिटी इज नॉट गुड, एज यू गाइस नो आई एम यूजिंग फोन. सो यस लाइक वीडियो क्वालिटी इज नॉट दैट गुड. या बट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है. तो मैं बना मतलब मैंने तो वो कर लिया है, लाइक वीडियो तो बना लिया है. अभी मैं इसके साथ ही लगा दूंगा वो वीडियो, आप लोग देख लीजिए और एंजॉय कीजिए. हम लोग अम्बेडकर भवन, सेंट्रल लाइब्रेरी एंड इवन बॉयज हॉस्टल एंड दैट ऑडिटोरियम. यस, ये तो देखने में पता चल जाता है कि लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट. लाइक इट नॉट सीम लाइक सेम like the other university, the infrastructure of our department. So here is the video which I have taken from the plane, and do and like enjoy the video. It's very pretty. Here it is, our Ambedkar Bhavan, our library, our department and auditorium. Thank you and enjoy. And as much as I can, I'll make video as soon as possible. The next video will come soon. So yes, stay tuned, and yes, do subscribe my channel, hit the bell icon, and please do like my videos. I'm telling you once again, guys, don't get irritated. But yes, please do share my videos, and yes, thank you. It was what to say, it's been I guess 3-4 months, like almost 5-6 months with you guys. It was a great experience, and yes, I liked it and I loved it. Yes, and I will make as much as videos. I'll try to inform you guys as much as as much as knowledge I have with me. I'll obviously gonna share everything with you guys. And yes, please to subscribe my channel. Yes, bye bye, see you super soon. Ta-da.